5 बजे से 4 टूरने चली जाती हैं और 2-4 प्यूर हम लाठी से झूर झूर कर बीन कर दोपहर में घर आ जाती हैं और फिर बेच बाच कर पैसा बना लेते हैं जी। पैसा बनाकर फिर 2-4 महीना खर्चा पानी चल जाता है। Chhindwara in Madhya Pradesh is surrounded by thick forests and abundant chironji trees, also known as charoli, which has gone unnoticed for over half a century. However, the local residents have been collecting chironji for years from the forests. They sell it in the local markets or to the local processing unit owners. किसान लोग जब पेड़ों से तोड़ के लेके आते हैं, पक जाता है, ये अप्रैल मई में निकलता है। उसके बाद में ये सब धुलाई करके साफ करके ये फुटकर व्यापारियों के पास में लेके आते हैं। फुटकर व्यापारी इनको इकट्ठा करता है, 2 कट्टे 5 कट्टे, ये हमको बेचते हैं। हमारे पास आने के बाद में इसको हम मशीन में फुड़ाई करते हैं। इसको फुड़ाई करने के बाद में इसका छिलका निकलता है, लास्ट में इसके जो चिरौंजी निकलती है वो हम इकट्ठा करके पाला करके लोकल मार्केट में बेचते हैं। Chironji is most famous for its expensive and high-priced almond-like kernels, which can be enjoyed raw or fried and are commonly used as a spice and dry fruit in Indian delicacies like sweets, kheer and meaty korma. Chironji seeds are nutrient-dense and have various medicinal properties, boasting an abundance of phenolics, natural antioxidants, fatty acids and minerals. The oil extracted from chironji seeds is often utilized to treat skin issues such as acne and blemishes and to remove spots from the face. Additionally, chironji serves as a vital source of income for tribal communities in Madhya Pradesh and other states, forming the backbone of their economy. Since chironji collected locally cannot be kept open for long as they lose their flavor and become bitter, they are sold to the agents in the local market, who in turn sell them for cold storage, fetching high profits. देहात में जो किसान होते हैं जंगल में वो बीन के लाते हैं, वो ला के धोल के माल बेचते हैं। उस माल को मैं अमरवाड़ा के बड़े व्यापारियों को बेचता हूँ, वो इसकी ग्रेडिंग करते हैं। But the real challenge lies in bridging the wider gaps. Linking these small-scale farmers with larger agri-businesses can significantly boost local employment. Cooperative initiatives can provide them with the necessary resources and training. Market access to small-scale farmers will help establish connections, collaborate and market their products more effectively, ensuring that they comply with required quality standards and get the right market price. Such sustainable links between the marginal producers, agri-businesses and the agro-industry not only fosters economic growth but will also empower local communities. It is believed that no one protects the forests better than those who live in them. Kons are one of the primary vulnerable tribal forest dwellers who ensure that the surviving chironji trees are not lost. अपने जीवन का सुरक्षा, अपना परिवार, अपने पीढ़ी पुस्तान तक को सुरक्षा, इसके लिए करते हैं पूजा। अपन से लगा वन विभाग तक के उसको रेख देख करते हैं, तो उसको काटन भी नहीं देते, बहुत बड़े अच्छे से उसको पालते हैं। As the chironji nut is in high demand in international markets and has emerged as a significant crop, it presents an excellent opportunity for local communities and entrepreneurs to tap into its potential through sustainable cultivation, value addition, and strategic market initiatives.